Good morning, children. And this is your second class of physics. Okay, in this session. Okay, so let's start. And first class we have already discussed about the unit, and the second class we want to be discuss dimension. So let's start and discuss about the dimension. Okay, at a first we already discussed what is the physical quantities. What is the physical quantities? Those quantities which can be used for measurement or those standard quantity which are measured is called physical quantities. वैसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं या मेजरमेंट करते हैं उन्हें हम क्या कह रहे थे? फिजिकल क्वांटिटीज. एज ए एग्जांपल एरिया. एरिया क्या है? आप इसका फॉर्मूला जब भी निकालते हैं तो अगर रेक्टेंगल लें, स्क्वायर लें तो क्या मेजरमेंट करते हैं? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी या साइड स्क्वायर. सो वी मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ. Then length is measured in meter, and also breadth is also one type of the length. Okay, so we measured in also meter, and both the unit meter and meter are give the product meter square. Okay, meter square. So this is the unit. Okay, and area is a derived quantities. What is the derived quantities? Those quantities which can be made by the help of fundamental quantities. Made by the help of fundamental quantities. यानी वैसी राशियां या वैसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से बनी हो. जैसे अब व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज? व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज? Those quantities which can't made by the another physical quantities या by the help of any physical quantities. Okay, 7 fundamental quantities हैं जो किसी के हेल्प से नहीं बने बल्कि ये स्वतंत्र हैं, ये खुद से बने हुए हैं, डेराइव जो मेजर किया गया है या जिसको डेवलप किया गया या शो किया गया है. ठीक है ना? एज ए एग्जाम्पल आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को जानते हैं, नहीं तो हम इसको डेराइव कर दे रहे हैं. इसके आधार पर ही इनको हम डायमेंशन को भी मेजरमेंट करेंगे, और डायमेंशन को मेजरमेंट करने के लिए हम देखते हैं. तो सबसे पहले एफ क्वांटिटी, दैट मींस फंडामेंटल क्वांटिटी. एफ क्वांटिटी दैट मींस फंडामेंटल क्वांटिटीज. द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर मास, लेंथ, टाइम, temperature, electric current, okay, electric current, luminous intensity, and last is amount of substance. Okay, 1 2 3 4 5 6 7, they are the 7 fundamental quantities. Okay, हम यहाँ पर सिर्फ इनका SI यूनिट ले रहे हैं, मैं बाकी सभी यूनिट को नहीं बता रहा हूँ. ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि FPS यूनिट सिस्टम क्या है, CGS यूनिट सिस्टम क्या है. ओके, तो SI यूनिट सिस्टम में देखते हैं. SI यूनिट सिस्टम जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम भी कहते हैं. ओके, ये 1960 में डेवलप हुआ था. इंटायर वर्ल्ड आपस में मिलकर ये डिस्कस किया कि सभी जगह मेजरमेंट स्केल अगर अलग अलग है तो हमें मेजरमेंट करने में कठिनाई हो रहा है. तो क्यों ना ऐसा एक यूनिट बनाया जाए जिससे आसानी से एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस कर सके. ओके, इजिली वे में दे आर ग्रो द बिजनेस. सो दे यूज द वन टाइप ऑफ द यूनिट विच इज कॉल्ड SI यूनिट. ओके, so India, Pakistan, Afghanistan, England, etc. all are uses the same type of unit which is called a standard unit system. Mass is used for measurement the unit, which unit is called kilogram, which is also in the short form kg. Length is used in measurement meter.
in the short form m. Time is the unit second. Okay. Now temperature in Kelvin. टेम्परेचर को बाद में जोड़ा गया है. ये सभी जो आपके 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज आए हैं ये बाद में है. बाकी ये तीनों MKS, CGS और FPS तीनों में ये यूनिट सिस्टम है. इन्हें ही आप बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से समझते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, डिस्कवरी हुआ, वैसे वैसे फिजिक्स में इन सभी को इंक्लूड किया गया. ओके. सो एनवायरमेंट का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो हम किस यूनिट का यूज कर रहे हैं? केल्विन में मेजरमेंट कर रहे हैं. ओके. ऐसे आपके पास और भी बहुत सारी यूनिट हैं, जैसे फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है केल्विन. इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आया. सो इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर. लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला. ओके. अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, वी नो दैट any type of the particle or a substance is made up of the tiniest particle, which is called atom. Okay, which is called atom. All the objects are made up of teeny particle, which is called atom, and we use the measurement of amount of substance of tiniest particle is the unit mole, MOLE. Okay, so these are the fundamental quantities. And these fundamental quantities are used to express the derived quantities. What is the derived quantities? Those physical quantities which are made by the help of fundamental quantities are called derived quantities. Example, area. Area is made by the length square or a two length L into B or a side square, two sides. Okay, so the length and breadth both are measuring in meter, and area is made by two length or two fundamental quantities of length. Okay, so we say that L to the power 2, L to the power 2. This power is expressed in this form is called dimension. Okay, so हम यह कह सकते हैं साफ स्पष्ट कि डायमेंशन क्या है, तो यह एक प्रकार का पावर है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर होता है और वो एक्सप्रेस करने में सपोर्ट करता है या एक्सप्रेस करने में मदद करता है हमारा डेराइव्ड क्वांटिटीज को. ओके. सो वी सिंपली एट अ फर्स्ट राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ सम फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके. सम फंडामेंटल क्वांटिटीज वी यूज द square bracket symbol for right here of the dimension. Okay, in any example of dimension we have to use the square bracket. Use the mass, and the dimension of mass is capital M. Okay, dimension. For length use L, capital L. Time for T. Temperature use Kelvin K, or someone use H also. Electric current use I, and someone also use ampere, because we know that current is discovered by ampere, है ना. So now next is intensity, luminous intensity, the intensity of light. Okay. So it is used the candela C, and we know that for measurement of amount of substance MOL. Okay. Now listen to me carefully. These three basic are maximum used in the calculation of derived quantities, for checking the formula. Okay. For relation between two different unit. Okay. And also वेरीफाई द एनी फार्मूला. हम इस तरह से डायमेंशन का यूज करते हैं. ओके. ये वीडियो सिर्फ 10 मिनट का है.